This topic is ratio. What is the definition of ratio? Ratio means nothing but the relation between any two numbers, which shows that how much bigger one quantity than the other. It means it's nothing but a relation between two quantities. Okay. Basically, suppose here, for an example, if A is to B is 3 is to 5. If A is to B is 3 is to 5, it means that if A will get 3 part, then B will get 5. A will get 3 part, then B will get 5 part. So total मिला के कितने part हो रहे हैं? 3 plus 5 is 8. So total part is 8, and out of which A is getting 3 part. Means out of which A is getting 3 part and B is getting 5 part. So this is how you can say that A will get 3 by 8 part and B will get 5 by 8 part. Okay. Now ratios जो होते हैं, that can be multiplied, that can be divided, that can be, but that cannot be added and subtracted. For an example, if I say that A is to B is 5 is to 3, then if this does not mean, these are not the values, these are the ratios. What this means? This means that if A is 5, then B is 3. But that is not sure, that you cannot be 100% sure that value of A is 5 only. Value of A can be 5. Value of A can be other than 5 also. For an example, if A is 10, then what will be the value of B? तो 5 से 10 कैसे पहुंचे? 5 से 10 पहुंचने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, and hence this also you have to multiply it with 2. So 3 into 2 is 6. Means 5 by 3 is also equal to 10 by 6. From this I can say that ratio can be multiplied, ratio can be divided. Also, for an example, this ratio 5 by 3 can also be written as 30. Suppose 3 becomes 30, 3 becomes 30, then 5 becomes 50. So 5 by 3 is also equal to 10 by 6 and is also equal to 50 by 30. तो अगर A और B का रेशियो अगर x by y है, then that can be written as x into m by y into m. आप दोनों नंबर को m से कोई एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. कंडीशन क्या है? जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है, वही नंबर से आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई. Similarly, ratio can be divided also. For an example, if A by B is 10 by 15, 10 by 15, so I can divide this ratio also. जैसे कि अगर A की वैल्यू 5 है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कैसे हो गया? 10 से 5 कैसे हो गया? This is divided by 2. 2 से डिवाइड किया तो 10 का 5 हो गया. Similarly, I have to divide 15 also by 2. 15 by 2 is nothing but 7. It means 10 by 15 is also equal to 5 by 7. From this I can say that ratio can be divided. Means अगर A by B की value x by y है, so that can also be written as x by m upon y by m. Ratios को आप divide भी कर सकते हो. But ratios cannot be added or subtracted. Ratio में आप addition या subtraction नहीं कर सकते. For an example, if A by B is 2 by 3, so if I say कि okay, A has become 3, मतलब 2 का 3 हो गया, मतलब क्या हो गया? +1 हो गया. तो यहाँ पर भी +1 कर देते हैं and 3 plus 1 will become 4. So from this can I say that 2 by 3 and 3 by 4 are equal? No, they are not equal. Why? Because आप रेशियो में कुछ एडिशन नहीं कर सकते. उसी तरह से आप रेशियो में कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. So if A by B is 3 by 5 and if the value of A becomes 30, it means 3 has become 30. कैसे 3 का 30 कैसे हो गया? Because मैंने 10 से मल्टीप्लाई. That case 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So you get this 3 by 5 is also equal to 30 by. Now if 5 becomes 20, like for an example, the value of B here is 20. It means 5 का 20 हो गया. 5 का 20 कैसे हो गया? आपने 4 से मल्टीप्लाई. 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 into 4. This is how we did. Now suppose this is very important part. Concepts of ratio are very important because वही concept of ratio से आप आगे के chapter, there are so many chapters which are dependent on ratio. Like there is a chapter age, mixture allegation, partnership, even profit loss में, simple interest compound interest में, हर जगह आपको ratio
तो दिखता ही है. So ratio is a very important chapter and hence it's very important for you to understand the concept of ratio. Now suppose A is to B is 3 is to 5. Then if A is equal to 3, see ये ratio है, ये value नहीं है. A की वैल्यू 3 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. B की वैल्यू 5 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. But here they have given the value that if A is equal to 3, then can I say B is equal to 5? अगर A 3 है तो B 5 हो जाएगा. Next, if B is equal to 10, मतलब as per the ratio, what is the value of B? As per the ratio, value of B is 5. But यहाँ पर वैल्यू जो है वो 10 है. तो 5 से 10 कैसे हो गया? इंटू 2 किया. तो आपको A को भी इंटू 2 कर देना है. What is the ratio? As per the ratio, A का ratio is 3. So it is 3 into 2, which is equal to 6. It means if B is equal to 10, then A is equal to 6. Now, suppose if A plus B is equal to 16, then what is the value of A and what is the value of B? अभी A plus B दिया है, हमें इसकी वैल्यू दी है, तो हम देखते हैं कि रेशियो के हिसाब से A plus B क्या होगा. As per the ratio, can I say A plus B is nothing but 3 plus 5, which is equal to 8. और यहाँ पर 8 नहीं दी है A plus B की वैल्यू. A plus B का वैल्यू हियर इज गिवन एज 16, मतलब डबल दे दिया है, इंटू 2 कर दिया है. तो हमें A को भी इंटू 2 करना पड़ेगा. So 3 into 2 will become 6 and 5 into 2 will become last. If B minus A is equal to 20. तो यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है? B minus A. तो हम देखते हैं कि ये जो रेशियो है उसके हिसाब से B minus A कितना होगा. So as per the ratio, B minus A is nothing but 5 minus 3, which is equal to 2. But यहाँ पर वैल्यू 2 नहीं दी है, यहाँ पर वैल्यू is given as 22. मतलब 11 से मल्टीप्लाई कर दिया. So I will multiply A also with 11. So A will become 33 and similarly B will become. ठीक है. अगर इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको A और B का रेशियो दिया है और अगर A plus B, A minus B ऐसा कुछ भी दिया है, then you can find the value of individual value of A and B. Let's start with the question. First, we will solve some easy basic questions and then we will go for difficult. Now, if 1000 you have to divide between A and B in the ratio of 3:2, then you have to find how much A will receive. Basically 1000 है और आपको उसको A और B में डिवाइड कर देना है. A और B का रेशियो क्या है? 3:2 का. इट मीन्स कि टोटल 5 पार्ट है और टोटल इज 5. और 5 में से A को मिल रहा है 3/5 और B को मिल रहा है 3/5. अभी हमें फाइंड आउट करना है A के बारे में, दैट हाउ मच A विल कितना मिलेगा A को. A का पार्ट है 3/5. 3/5 किसका? 3/5 ऑफ द टोटल अमाउंट, दैट इज 1000. 3/5 ऑफ 1000 इज नथिंग बट 3/5. इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, आंसर इज 6. So A को कितना मिलेगा? आउट ऑफ दिस 1000 A विल गेट 600. सपोज यहाँ पर A की जगह पे B होता है, तो क्या आंसर करते हैं? B के बारे में आप क्या लिखते हैं? तो B इज नथिंग बट, B का पार्ट कितना है? 2/5. So it is nothing but 2/5 into 1000 is equal to, B को मिलता 400. Here, let's go to this next question. You have to divide rupees 782 into 3 parts, which is proportional to this. इस पार्ट में आपको डिवाइड करना. 782 को आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, लाइक दिस. पहला हिस्सा है हाफ, सेकंड इज 2/3, थर्ड इज 3/5. Now what is the difference between the first question and the second question? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 1000 को डिवाइड करना था 3:2. Here you have to divide 782 in these 3 parts. So the only difference is that here the ratio was in the whole number. Here the ratio is in the form of fraction. फ्रैक्शन जो है ये हमें इतना समझ में नहीं आता है. सो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम होल नंबर कन्वर्ट कर देंगे. इस फ्रैक्शन से हम होल नंबर पे चलेंगे. क्या रेशियो क्या दिया है? 1/2, 2/3, 3/5. 3 रेशियो है. इसको हमें होल नंबर में, इसके होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे? So for that we have to multiply this ratio with such a number which
डिवाइड्स 2, 3 and 4. तो बेसिकली आपको 2, 3 and 4 का एलसीएम है. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4? सो देखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4. 2 जो है 4 का फैक्टर है, तो 2 को आप इग्नोर कर दीजिए. जस्ट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3 and 4. 3 and 4 का एलसीएम होता है 12. तो आप ये पूरे फ्रैक्शन को 12 से डिवाइड कर, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो योर न्यू रेशियो, एंड कैन यू डू दिस? कैन यू मल्टीप्लाई द रेशियो? यस, यू कैन मल्टीप्लाई द रेशियो. रेशियो को आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So what will be the new ratio? New ratio is nothing but half into 12. So 2 by 3 into 12. 3 by 4. This value will become 6 to 8. So the new ratio is 6 is to 8 is to 6 is to 8 is to 9 आपका नया रेशियो. तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इसकी जगह पे ये जो नंबर है, इसकी जगह पे हमें ये वाला रेशियो. So now you have to divide 782 into 3 parts. What are these 3 parts? 6, 8. You have to find out the first part is what. The first part is nothing but what is the total? 6 plus 8, 14. 14 plus 9, 23. इसमें से पहले वाले को मिला है 6 by 23 and the total amount is 780. तो आपको ये करना है 6 by 23 into 780. Divide this 782. So 23 3s are 69. So this is 3 and 78 minus 69 is 92. So this is 24 into 6. 34 into 6 कितना हो जाएगा? 34 का डबल होता है 68 और 68 का डबल होता है 1. This is 3. This is 6. 34 into 6 के लिए आप यहाँ पर 4, 2, 3 into 6 is 18, 18 plus 2. A will get the first part is nothing but 20. अगर उसी तरह से अगर सेकंड पार्ट निकालना है, सेकंड पार्ट सपोज फर्स्ट पार्ट की जगह पे सेकंड पार्ट दिए, तो आप क्या करोगे? टोटल इज 23 और उसमें से 8 पार्ट, सेकंड पार्ट इज 8, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 7. इसका आंसर जो आएगा दैट इज दिस. लेट्स कम टू दिस. If A is to B is 2 is to 3 and B is to C is 6 is to 11, then you have to find A is to B is to C. और यहाँ पर आप देख रहे हो A is to B की वैल्यू दी है और यहाँ पर B is to C की वैल्यू दी है. In this two variable, here there are two variables A and B, and here there are also two variables B and C, and the common variable is B. B यहाँ पर और यहाँ दोनों जगह पे कॉमन है. तो अगर B कॉमन है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. ऐसा तो नहीं होगा कि B की वैल्यू अलग अलग होगी. Here you can see the value of B is 3 and here the value of B is 6. These two values are different. So what you have to do? You have to make this value of B same. या तो आप इसको 6 बना दो या तो आप इसको 3 बना दो. अभी इसको 6 इसको 3 बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको 6 बना देते हैं. It means that A is to B is equal to 2 is to 3. We want to make B 6. B को 6 बनाना है. अगर 3 का 6 कर दिया तो 2 का क्या हो जाएगा? 4. Means A is to B is 4 is to 6. B is to C, we know that it is 6 is to. From this, A is to B is to 6. Is nothing but what? A की value है 4. Now don't take this value. You have to take this value. A is 4, A is 6, which is common in both this and C. Answer is 4 is to 6 is to. This is how you can combine the ratios. Go to the next question. See what is given. A is to B is 3 is to 4. B is to C is 5 is to 9. And C is to D is 16 is to 15. You have to find the relation between these. Now, how you will do this? आपको सिर्फ पहले और लास्ट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी. यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट वेरिएबल. उसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, इतनी आसानी से हो जाएगा. A by B,
into B by C, C by D. तो ये किसके बराबर होता है? इस B भी gets cancelled, C gets cancelled. This is nothing but A by D. मतलब अगर आपको A by D की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पर वैल्यूज डालनी है. What is A by B? Can I say from this that A by D is nothing? A by B is 3 by 4. B by C is 5 by 9. C by D is 3, 5. 15 gets cancelled. Answer is 4 is 2. तो इसमें हमने कोई भी रेशियो को इक्वेट नहीं किया. देखो यहाँ पर b की वैल्यू 4 थी, यहाँ पर b की वैल्यू 5 थी. Here the value of c was 9, here the value of c was 16. लेकिन हमने किसी को भी इक्वेट नहीं किया, किसी को भी इक्वल नहीं बनाया. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ a इसलिए b निकालना है. बट सपोज क्वेश्चन ये होता दैट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट a is to d, अगर आपको ये फाइंड आउट करने का आगे फाइंड आउट a is to b is to c is, फिर आपको इन सबको इक्वेट करना है. कैसे इक्वेट करते देखिए. कैसे करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम. देयर आर 4 वेरिएबल्स, सो राइट ऑल द 4 वेरिएबल्स. पहले में क्या लिखा? a is to b is 3 is to 4. राइट हियर 3, राइट हियर. b is to c is 5 by 9, तो b के नीचे 5 लिखो, c के नीचे 9 लिखो. c is to d is 16 is to 4. दिस इज हाउ यू डू. इस तरह से आपको. नाउ ये जो जगह खाली रह गई है, यहाँ पर ये जो जगह खाली रह गई है, वहां क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपको उसके नेबरिंग नंबर्स लिखने हैं. जैसे कि ये जगह खाली रह गई तो उसका नेबर कौन है? 4, तो यहाँ पर 4 लिखो. राइट हियर ऑल्सो 4. इस जगह के बाजू में 9 है, सो राइट हियर 9. और इस बॉक्स के बाजू में 5 है, तो 5. इस बॉक्स के बाजू में 16 है, तो राइट 16 और 16. ये आपको कब करना है? जब आपको पूरा फाइंड आउट करना है आपको, तो फिर ऐसा करना है. ठीक है. अभी आप देखिए, a का वैल्यू है 3 इंटू 5 इंटू 16, b का वैल्यू है 4 इंटू 5 16, c इज 4 इंटू 9 इंटू 16 एंड d इज 4 इंटू 9 इंटू. ये इससे आपको a इज टू b इज टू c इज टू d मिल जाएगा. लेकिन क्यों ना हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और बेटर तरीके से लिखें, सिंप्लीफाई करें. तो अगर कुछ कॉमन है तो उसे निकाल दें. जैसे कि हियर आई कैन सी इन b में 4 इज देयर, c में भी 4 है, b में भी 4 है, और a में भी यहाँ 4 छुपा है. दैट वी कैन कैंसिल. सो लेट्स कैंसिल. 16 में से 4 निकल जाएगा तो 4 बच जाएगा. देन यू टू सी इज देयर एनीथिंग एल्स कॉमन. जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 नहीं है. हियर इट इज 5, हियर इट इज 5, बट यहाँ पर 5 नहीं है. ठीक है. तो अभी आप इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते. सो व्हाट इज a? a is nothing but 3 into 5 15, 15 into 4 16. b is 5 into 16 which is 18. c is 16 into 9, 16 into is equal to 144, and d is 15 into 9, 15 into 9 is 1. तो ये आपका रेशियो होगा. A sum of money is to be distributed between a is to b is to c is to d in which proportion? In the proportion of 5 is to 2 is to 4 is to this proportion of. What is written? If c gets 1000 more than d, मतलब आपको ये वाली वैल्यू दे दी गई है that c minus d is equal to, तो आपको निकालना है b का शेयर. b का शेयर निकालना मतलब इसका वैल्यू निकालना है आपको. सो हमें किसका वैल्यू दिया है? c minus d इसकी. So as per the ratio, what is c minus d? As per the ratio, c minus d is nothing but 4 minus 3, which is equal to 1 unit. और इसकी एक्चुअल वैल्यू दे दी गई है that this is nothing but. So if 1 unit is equal to 1000, 2 unit, 2 unit is equal to this. Salaries of A, B, and C are in the ratio of B, C की सैलरी का जो रेशियो है 2, 3 and 4. If 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, इतना इंक्रीमेंट दिया गया है सैलरी.
इसमें कितना इंक्रीमेंट है 15%, इसमें कितना इंक्रीमेंट है 10%, इसमें कितना इंक्रीमेंट है 20%. Then what will be the new ratio that will, अगर आप इसमें 15% का इंक्रीमेंट करते हो तो देखो कैसे करेंगे इसको. The ratios are 2:3:5. भी हमें 15% इंक्रीमेंट कर रहा है. 15% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड 15% इंक्रीमेंट? 50%, सब इसको सपोज हम मान के चलते कि ये 200 है, वैल्यूज इज 300 एंड दिस इज 500, सब मान के चलते हैं. सो 15% इंक्रीमेंट इन 200. 15% इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? दैट 100 हैज बिकम 115. But this value is not 100. A is 200. So if 100 becomes 115, 200 becomes 230. इसका मतलब है कि ये 200 का 230 हो जाएगा. Similarly, 10% increment means what? It means that 100 becomes 110. So, but this value is 300. 300 कितना हो जाएगा? 300 will become 330. और 500 में 20% increment. 20% increment means what? That 100 has become 120. 500 will become 100 से 500 कैसे किया? Into 5 किया. यहाँ पर भी into 5. So it becomes 6. This is the new ratio. ये आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे. So this 0 0 is cancelled. So answer is 23. Now let's talk about the proportion. If A is to B is in proportion to C is to D, it means what? If A by B is equal to C by D. Suppose इस तरह से आपको दिया गया. Then you can see here there are 4 variables A, B, C and D. So here this D is called the fourth proportion. Is called the fourth because there are 4 variables. For an example, can I say 2 by 3 is equal to 4 by 6? So here the 6 is the fourth proportion. 6 is the. Now what is the third proportion? The third proportion of a proportion is the second term of the mean term. Third proportion मतलब इस form का होता है. If A by B is equal to B by C. You can see there is a difference between this and this. Here it was A by B is to C by D. Here it is A by B is in proportion to B by C. Means here there are only 3 variables A, B and C. ये B जो है ये दोनों जगह पे सेम है. जैसे कि 4 by 6 is or rather I would say 4 by 12. Suppose 4 by 12 is equal to 12 by 36. 4 by 12 is equal to 12 by 36. Is it correct? Yes. And here you can see there are only 3 variables. So 4 एक टर्म है, एक 12 है और एक 36. ये दोनों कॉमन है. So this is called, this here, this B is called the mean term. B को क्या कहेंगे आप? Mean term. B is the mean term. As you can see, this is mean proportion means it's like wherein here X is common. दोनों जगह पे X. This is also called as continued proportion. Continued proportion means A by B upon B by C, C by D. This is called continued proportion. अगर इस फॉर्म से है अगर कुछ तो उसे continued proportion. Let's talk about this. The ratio of third proportional to 26 and 16 and 26 and the mean proportion between 9 and 25. थर्ड प्रोपोर्शन की बात की गई है मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 वेरिएबल है. लाइक मल्टीप्लिसिटीज ऑफ दिस फॉर्म A by B is equal to B by C. इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन है इसकी आपको वैल्यू निकालनी है. इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड वैल्यू. इट मींस 16 upon 26 is equal to 26 upon X. This is a third proportion. So here I have to find out the value of X. X is equal to कितना हो जाएगा? 26 into 26 upon 16.
एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन. एज आई टोल्ड, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इस वाले में बी इज द मीन प्रोपोर्शन. और बाकी के दोनों टर्म क्या है, 9 एंड 20. सो फर्स्ट टर्म इज 9, सेकंड टर्म है मीन प्रोपोर्शन जो हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज आल्सो y ओनली, एंड द थर्ड टर्म इज 20. From this, what is the value of y? Can I say y square is equal to 9 into 20? Therefore, y is equal to what? 3 into 5, which is equal to. So, हमें क्या पूछा गया है? आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है. मीन्स आपको x is to y की वैल्यू निकालनी है. x is 26 into 26 upon 16 and y is 50. इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 हो जाएगा. दिस इज 2, दिस इज. तो आंसर इज कितना आ जाएगा, 13 into 13 is 169 by 4 is to. तो ऑप्शन में आप देख रहे हो कोई फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. सो यू विल गेट 169 is to 169 is to. The number to be added to each number to make the number in proportion. So the numbers are 7, 16, 42 and 17. The number to be added to each number. आपको एक नंबर ऐड करना है, जैसे कि सपोज आपने x ऐड कर दिया. Then thus number becomes in proportion. In proportion मतलब ये और ये equal. There are two ways to solve this particular question. The first method is a standard traditional method, wherein what you will do? You will do this 7 plus x into cross multiply कर देंगे is equal to 23 plus x into 16. अभी आप जब ये करोगे, you can see these numbers are so big. For that you have to do 7 into 79, 43 into 16. Plus this will take you into the world of quadratic. Okay? As such, we have a problem. So what we will not use this method. This method को हम use नहीं. ये method use. What we will use? सबसे best method, that is use the method option. इस problem को हम option elimination से solve. First, in place of x, let me put 2. इसकी जगह पे अगर हम 2 डालते हैं तो क्या बन जाएगा? 7 plus 2 9, 16 plus 2 18, 43 plus 2 45 and 79 plus 2. क्या ये प्रोपोर्शन में है? नहीं. ये देखो डबल हो रहा है, 9 का 18 हो रहा है और 45 का 90 नहीं हो रहा है. इट मींस दिस इज रॉन्ग. नाउ पुट x इज इक्वल टू 3. 7 plus 3 10, 16 plus 3 19, 43 plus 3 46, 79 plus 3 82. इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको 23 हो जाएगा. दिस इज 2. So not 18, but this is also not in proportion. We'll put x is equal to, this will become 7 plus 5 12, 16 plus 5 20, 43 plus 5 43 and 79 plus. अभी देखते हैं क्या ये प्रोपोर्शन में है. So this will become 4 and this is 7, or 12 4s are 48, 12 7s are 4 by 7 4 by 7 means this is correct answer. Such type of problem can be, you can solve using option elimination. Next question. A sum of rupees 1300 is divided amongst P, Q, R, and S such that P by Q, Q by R is to R by S is 2 by 3. अब रेशियो ये दिया है, P by Q is 2 by 3, P by R is also 2 by 3, R by S. आपको इनको डिवाइड करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट पी शेयर. मतलब बेसिकली पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो व्हाट इज P इज टू Q इज टू R, ये वैल्यू है. और दैट व्हाट यू विल डू, कॉमन क्या है देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में Q इज कॉमन. इस केस में Q 3 है, यहाँ पर Q 2 है, तो 3 and 2 का एलसीएम 6.
3 का 6 कर दो, 3 का 6 करेंगे तो 2 का 4 करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 का 6 कर रहे हैं, कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो this is- Now let's come here r is 9 and here r is 2। अभी आपको 2 की जगह पे 9 कर रहे हैं, इट मीन्स ये जो 2 है उसकी जगह पे आपको 9 बना के लाना है। फिर 9 कैसे आ जाएगा, 2 का 9 कैसे किया आपने, आपने इंटू 4.5 कर दिया, बिकॉज 4.5 इंटू 2 इज 9, तो इसको भी इंटू 4.5 करेंगे। 45 3 जा 135, so this is 30। फाइनली रिपोर्ट इज, आपने सब इक्वेट कर दिया। सी क्यू यहाँ पर 6 है, क्यू यहाँ पर 6 है, आर यहाँ पर 9 है, आर यहाँ पर 9 है, so आपने सब इक्वेट। P is to Q is to R is to 6 is nothing but 4 is to 6 is to 9 is to 13 और आपको P का शेयर निकालना है। P का शेयर कितना है, 4 शेयर है आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है, 4 plus 6 10 10 19 19 and 13, 19 and 13 is 22 32 32 point, this is nothing but my total value is now this 32.5, can I write 32.5, 32 का डबल कितना होता है 64, can I write 32.5 as 65 I think, ये बेटर रहेगा। So 4 divided by, in place of 32.5 I'm writing 65 I, फिर 2 यहाँ लिखने से बेटर है कि 2 को ऊपर लगा दो, so this into 1300 जा 1300, 13 5 जा 5, 4 into 2 8, 8 into 2 16, B का शेयर कितना आ जाएगा, आंसर इज सपोज 2 whole numbers whose sum is 72, 2 whole number है, मतलब I consider let the whole number as a plus b, so a plus b is 72 wherein a and b both are whole number, उनका रेशियो क्या नहीं हो सकता, तो इनका रेशियो क्या हो सकता है, a is to b का रेशियो, ऐसे if a plus b is 72 तो a is to b क्या नहीं हो सकता, देखो जैसे 5 plus 5 is to 7, हमें यहाँ पर सम पूछा गया, as per this what is the sum, 5 plus 7 is 12, 12 is a factor of 72, yes 12 is a factor of 72 and hence this can be possible. 3 plus 5 8, 8 is a factor of 72, yes and hence this also can be possible. 3 plus 4 7, 7 is a factor of 72, no it is not a factor of 72 और ये एक रेशियो नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर। Let's come to the next concept, that two numbers are in the ratio of 3 to 4. Okay? So when the two numbers are in the ratio of 3 to 4, can we assume the number as 3x and 4x? क्या हम नंबर को 3x and 4x assume कर सकते हैं? Yes. In that case, what is the HCF? HCF is nothing but the highest common factor. अच्छा 3x की क्या क्या फैक्टर है? 3x को अगर आप करोगे तो 3x के फैक्टर है, एक है 3 और एक है x। सिमिलरली 4x की क्या फैक्टर है? 4 and x। इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है? x, और वही हाईएस्ट है, so your highest common factor is x। What about LCM? LCM के लिए आप क्या करोगे? LCM के लिए जो कॉमन चीजें हैं वो निकाल देंगे, तो x ले लिया आपने, कॉमन है उसको निकाल दिया, तो इसको अभी आप कैंसिल कर दो, बचा क्या? 3 and 4, anything common over there? No, so that you have to write as it is, it is 12x। LCM is equal to 12x, so अगर दो नंबर का रेशियो 3:4 है, then you can assume the number is 3x and 4x and उनका HCF और LCM ये हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट LCM में 12x की जगह पे 12x स्क्वायर लिख देते हैं, दैट इज द रॉन्ग, वो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, 2 बार। नाउ लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर केस दैट HCF ऑफ टू नंबर इज 6, दो नंबर का HCF 6 है, 6 मतलब 6 उनका सबसे बड़ा फैक्टर है, then can I assume the number as 6a and 6b? बरोबर है, तो फिर 6 एंड 6 भी दो नंबर हो जाएंगे, दिस इज हाउ आई कैन अज्यूम द नंबर। और इन दो नंबर का एलसीएम कितना होगा,
6 कॉमन है, so that I have to write only once. बचा क्या? A. It is LCM will be 6. This is very very important concept. Let's solve the question based on it. Two numbers are in the ratio of 3:2. दो नंबर का रेशियो 3:5 है. So can I assume the number as 3x and 5x? उसके हिसाब से उनका एलसीएम कितना हो जाएगा? Can I say LCM is nothing but 3 into 5, 15, और x जो कि कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, दैट इज 15, और इसकी वैल्यू दे दी गई है हमें 220. 15x is 225, so x is equal to, आपको क्या निकालना है? स्मॉलर नंबर मतलब ये वाला नंबर. So if x is 15, x is 3 into 15, which is 5. इसमें अगर आपको स्मॉलर नंबर की जगह पे अगर पूछा होता बिगर नंबर, फाइंड आउट द बिगर नंबर, तो आप क्या करते? फिर आप इसकी वैल्यू निकालना, जिसकी वैल्यू होगी 5 into 15. ये स्मॉल नंबर और ये in a bag there are coins of 25 पैसा, 50 पैसा, सॉरी 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा. एक बैग है, उसमें कुछ कॉइन्स है. एक है 25 पैसे का कॉइन, 10 पैसे का कॉइन, और कुछ है 5 पैसे का. What is the ratio of the quantity of the coin is given as 1:2:2. ये रेशियो है. इस क्वांटिटी में ये पैसे रखे गए. इन टोटल देर आर 30 रुपीज इन द बैग. आपको बताना है उसमें से कि 5 पैसे वाले कॉइन्स की, 5 पैसे वाले कॉइन्स. इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल अज्यूम कि मान के चलते कि भाई इस पर्टिकुलर बैग में एक ही कॉइन है 25 पैसे का. देयर इज ओनली वन कॉइन ऑफ 25 पैसे, वन कॉइन ऑफ 25 पैसे. देन वी विल अज्यूम दैट देयर आर टू कॉइन्स. और ये एक कॉइन है तो ये डेफिनेटली दो कॉइन होंगे, तो टू कॉइन्स ऑफ 10 पैसे. एंड लेट मी टेक थ्री कॉइन्स ऑफ. Now just think that if you have one coin of 25 पैसा, तो कितना पैसा हो गया आपके पास? When I say the total amount you have is 25 पैसा only. Similarly, there are two coins of 10 paisa. The total amount you have here is 20 paisa. And here you have three coins of 5 paisa. So the total amount is 15. सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 plus 15 is 40. 40 plus 20 is 60. Total you have 60 पैसा. बट बैग में क्या 60 पैसा है? नहीं. बैग में कितना है? 30 रुपीज. 30 रुपीज मतलब 3000 पैसा. 30 रुपीज इज इक्वल टू 3000. सो हमने अगर ये अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था कि बैग में इस प्रोपोर्शन में कॉइन्स है. बैग में एक कॉइन 25 पैसे का है, दो कॉइन 10 पैसा है, कॉइन 5 पैसा. उसके हिसाब से 60 पैसा आया है. बट इन द बैग एक्चुअली देयर आर 3000 पैसा. ये कितना टाइम्स ज्यादा है? क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? कैंसिल करेंगे तो दिस इज 50 टाइम्स मोर. इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है उसको भी हमें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्वेश्चन किसका पूछा है? 5 पैसे का. तो हमने 5 पैसे में कितने कॉइन लिए थे? 3 कॉइन लिए थे. बट एक्चुअली में 5 पैसे के 3 कॉइन लिए. 3 into 50 which is equal. ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पर क्या है? देयर आर 378 कॉइन्स. यहाँ पर कॉइन्स की क्वांटिटी दे दी गई है. टोटल कितने कॉइन्स? कौन कौन से डिनोमिनेशन है? 1 रुपी का एक. देन यू हैव 50 पैसा. रेशियो ऑफ देयर वैल्यू. वैल्यू की रेशियो दी गई. मतलब 1 रुपए के जितने कॉइन्स है उसकी वैल्यू 13 है. तो 20 रुपए के जितने 50 पैसे का जितना कॉइन है उसकी वैल्यू है 11. 25 पैसे के कॉइन की वैल्यू 7. और टोटल कॉइन्स दी गई है. फिर नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन? पहले वाले क्वेश्चन में रुपीस टोटल दिया गया है. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं.
A4. Now just imagine that you have 13 rupees. मान के चलते कि बैग में 13 रुपए, 11 रुपए और 7 रुपए, ओके, इतने ही रुपए है बैग में। तो 13 रुपीज जो है वो किससे बन के आए हैं? वो ये 1 रुपी के कॉइन से बन के आए हैं। कितने कॉइन होने चाहिए 1 रुपी के? 1 रुपी के नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होना चाहिए, तब जाके वो 13 बनेगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 13 होने चाहिए। 50 पैसा की वैल्यू कितनी है? 11 रुपीज। तो कितने कॉइन होंगे, कितने कॉइन मिला के 11 रुपीज होते हैं? कितने कॉइन 50 पैसे का मिला के 11 रुपीज होंगे? फॉर दैट यू शुड हैव 22 कॉइन्स, और 25 पैसे की टोटल वैल्यू है 7 रुपीज। तो आपके पास कितने कॉइन्स होने चाहिए? कैन आई से यू हैव 7 into 4, दैट इज इक्वल टू 28 कॉइन्स। इसका मतलब है कि अगर बैग में इतने रुपए हैं तो कॉइन का जो प्रोपोर्शन है वो इस तरह से, प्रोपोर्शन ऑफ कॉइन जो है 1 रुपी का, 3 पैसा का, 5 पैसा का, प्रोपोर्शन ऑफ कॉइन इस तरह से, क्वांटिटी ऑफ कॉइन। आपको कितने किसके कॉइन्स निकालने हैं? 50 पैसा वाले, मतलब इसका कितना पार्ट होगी? 22 आउट ऑफ 28 + 22 इज 50, 50 + 13 इज 60। इट मीन्स बी का ये जो 50 पैसा है ये कितना है? इट मीन्स अगर बैग में 63 कॉइन्स है टोटल, तो उसमें से 22 कॉइन्स जो है वो 50 पैसा है। बट बैग में क्या 63 कॉइन्स है? नहीं, बैग में तो है 378 कॉइन्स। अच्छा, पहले तो देखो क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 15 और 3 18, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो दिस 7 22 6 1। I hope you understood this.